So as I was saying कि जो लिंक लिस्ट है उसमें एडवांटेज ये है कि random means they are accessing to the address, so you don't have to be restrict with the size, or with a limited size also you can able to access it. तो एक continuity नहीं होता, एक you don't have to follow the linear sequence. So this is the advantage. Here also this we follow circular linked list is also happening here. Means यहाँ पे भी अगर ये जो node है, if it point back to this, so it's like a circular linked list. So in this linked list also, if this node point back to this one, so we follow that circular linked list. So there are a single linked list is there. In that double linked list is also possible. Double linked list means what? Let me show you the image. You will come to know about from that. I will going to show you the image. Now many people they are working on this double linked list. तो इतना एडवांस हो गया ये देखो, ये जो इमेज में देखो, is it visible to you? Yes. देखो दिख रहा था उसमें। हाँ, तो इसमें सिंगल लिंक लिस्ट में कैसा होता है, वन नेक्स्ट और ये नेक्स्ट नेक्स्ट होते जाते हैं, मतलब नेक्स्ट मतलब होता तो है कि इसमें प्रीवियस एड्रेस भी सेव हाँ होता है। हाँ, बट अभी यहाँ पर कैसा हो रहा है कि नेक्स्ट, बट अब डबल लिंक इसमें हम लोग प्रीवियस को प्रीवियस। भी हाँ मैं वी आर गोइंग टू कंसिडर द प्रीवियस नोड ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट से नेक्स्ट नोड जा सकता हूँ, और मैं किसी भी नोड से प्रीवियस नोड को, मतलब एक एक नोड अपने आजू और मतलब अपने अगल बगल में जो नोड है, या बेस्ड ऑन द एड्रेस इट कैन टेक रेफरेंस टू अदर नोड ऑल्सो. सो दिस द एडवांटेज ऑफ दिस. ओके। इसमें एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का भी कंसेप्ट है, वो मैं दिखाता हूँ. तो ये प्रीवियस वो और नेक्स्ट, ऊपर ही लिखा हुआ। हाँ, तो जो प्रीवियस और नेक्स्ट जो है वो एक्चुअली में होल्ड करता है, मतलब डेटा आपका, मतलब एड्रेस होल्ड करता है. एंड लेट्स हम्म। यूज सर्कुलर लिंक लिस्ट. या सो इट इज लाइक, जो यहाँ लास्ट वाले में फर्स्ट एड्रेस से वो। यस. सो सी नॉर्मली क्या होता है कि एक पॉइंटर होता है, हेड पॉइंटर. हेड पॉइंटर आपके फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है, एंड दिस इज टेकन बाय मेमोरी. फर्स्ट दिस हेड पॉइंटर will going to hold the address of your first node. Then first node onward, they will keep the track of the another node. But how this first node will be started, right? You need something like inside the memory who can keep the track of the first node, and from there the chain will start, right? So this first node will be address is held by one node, that is called a head node. Some people they call as a start node. In the Chomsky series book, if you open the link list, you will find that. So this node is holding the address, means this is the beginning of the linked list. Whenever the data have to save inside the memory, or whenever any process they wanted to access the data, we are going to save it and we can access it. So in order to access that 1001, this is my data, 10 is my data, this is an address, 104. 104, I will going to check where is the address, so he can see 104 is the address. Here I will यस। going to say the next data address. Like this it works. ओके। Okay. So it is very easy here. Insertion at the beginning. So हम लोग जब भी whenever we start working, what's our criteria for inserting an element? First of all हम लोग क्या करते हैं, एक node को create करते हैं. और उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं, is my head node is null? Head node मतलब क्या मेरा pointer जो है head pointer, उसमें क्या null value है? If it null value अगर उसमें होगी, तो obviously ये पूरी की पूरी list ही empty होगी, right? If it is list empty होगी, right? क्योंकि अगर तुम्हारे head node में, if this head node is having null value, it means that it doesn't holding any address, and it means that it is doesn't having any node, right? So like this it यस। works.
So here, whenever we do any insertion operation or whenever we do any operation, we check for this. अगर हमारा empty नहीं है, then what we will do, we will going to create a new node and we will going to point the next node as a head. मतलब head will going to hold the address of this new node and next node will be equal to head. मतलब अब जो new node है वो तुम्हारा beginning node बन गया, means head node बन गया. That's why it is called as a head is equal to new node. Are you getting what I'm Okay. means? ये जो next node है वो now it is holding the address of any new node. So now head is equal to become new node. So this is your No, no. new node. So we have to check like this कि अगर अगर हमारा head node जो है pointer है उसमें अगर address null होगा then we won't be do any insertion. We're not going to create that. So like this it's work. So let's see the program first. This is a simple program we're going to see on queue stack and linked list, and then we will keep on increasing the complexity also. See, so yesterday also I've shown you the stack program. So in the stack, what we're going to do, first of all हम लोग stack एक class create करेंगे, ठीक है? अब उस stack में हमें data save करने के लिए क्या क्या चाहिए? Stack का size, एक सम एक data structure चाहिए जो कि उसको hold कर सके. Stack, now the question is stack is also data structure, so हम array का use क्यों करें? But हमें element को save करना है, right? Stack is just for accessing the element, मतलब manipulation के लिए हो रहा है यहाँ पे. Stack क्यू जो लिंक लिस्ट है हम उससे डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, बट डेटा विल गोइंग टू बी सेव समवेयर, राइट? सो उसके लिए मैंने अरे यूज किया. देन आई यूज अ पॉइंटर टॉप हियर. इट some pointer we need it to save the data. Okay, I need some pointer to save the data, so I create the top. Now here I'm using this I created a constructor here. There are different way of working, right? अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप फंक्शन क्रिएट करके भी कर सकते हो, उसमें पैरामीटर पास कर दो. ये जो है ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. इफ यू रिमेंबर आई एक्सप्लेन constructor in that Java class, so I've explained this. Constructor are default type which is without parameter, and one is a parameter. Do you remember that? Yes. So this constructor, the parameter constructor, we have created it. Now in this, I wanted to access the means variable or element or whatever it is, which is this. We will going to use it with this keyword. Okay. This dot size, why I use it, so that to represent my stack, that I'm talking about the size variable of this class my stack. So जो this Yes. keyword होता है, this pointer we said this keyword is used to represent the current class object. लेकिन हम बाकियों को लेके यूज कर रहे हैं क्योंकि साइज हम मेकी कॉपी कर रहे हैं जो मेकी नीचे से भी आ रहा है एंड साइज. बाकी तो Sorry. इतने की सेम भी रह सकते, मेकी विदाउट दिस भी यूज कर सकते हैं. हाँ, बट लाइक कंस्ट्रक्टर को यहाँ कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज अ वैल्यू. तो यहाँ पे मैंने अब मैं साइज जो नीचे से आएगा फंक्शन से, तो अगर मैं इसको दिस नहीं यूज करता हूँ, साइज इज इक्वल टू साइज, वो गेट इट विल गेट कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज लाइक व्हाट साइज आई एम No, टॉकिंग अबाउट. this is I am fine with this, but we like in array size, array this dot array and this dot top, we like we can leave this, सॉरी आई एम and in नॉट size we गेटिंग. can use.
So we can write like this dot size is equal to size, and instead of this dot array, we can write array is equal to new int. Like this you are saying. Yes. You can use it, but like how the constructor will know like you are talking about array of from which. See, this keyword is why do we use that? Like in case suppose if you wanted to inherit this class into the another class. Suppose अगर मैं stack को inherit कर रहा हूँ queue में, and there also I'm using the same variable. I need something to distinguish that this keyword means this variable belong to this specific class or this constructor. So that's why I've used this keyword. अगर नहीं use करना है तो like okay you can check it. देखो अभी मैं run करता हूँ तो ये कुछ error तो नहीं आएगा, same it will give you. But just for safety purpose I've used this keyword. So अगर मैं इस class को inherit करता हूँ, so in that case I won't get any kind of error. This keyword won't give me any error. No. Remove करना है तो साइज में तो यूज करेंगे. देखो जब मैंने this keyword हटा दिया तो देखो full empty आ रहा है क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि साइज जो मैं पास कर रहा हूँ वो कौन सा साइज है, ये वाला साइज है या ये वाला साइज है. या इसलिए मैंने this keyword यूज किया था यहाँ पे. ये तो मुझे पता, मैं तो उसके लिए कह रहा था, हाँ तो टॉप एंड एरे के लिए. हाँ तो ओके बट आई वाज यूजिंग बिकॉज मैं क्लास को इनहेरिट करता हूँ. सो अगर मुझे कोई एरर ना आए, सो आई वाज whenever I write a code I just write down like this only that if somebody in the company, because if any one of you use your code, he will get an error if we don't add it. So I usually write ओके. like this, so that's why I've added. But you, it's your wish. If you don't want, you can remove also. So this is used. Now here I created a function. In that function I'm passing the element, but before passing the element I need to check what I need to check whether my uh, stack is empty or what. So in order to do that, I created one more function, is full. This is full function, I created it at the down. This you can see. This is full यस. function, I created it, and there I'm calling like this. Not is full. If my stack is not full, I will going to return the size minus one is equal to top. Means whatever the size minus one will be my top element. If it is full, राइट. अगर अरे का साइज क्या होता है, अरे का साइज मतलब आपका जो लास्ट इंडेक्स प्लस वन होता है. तो अगर साइज माइनस वन कर दोगे तो आपका लास्ट इंडेक्स आ जाएगा. सो इफ इट इज इक्वल टू यस. द टॉप, इट विल गोइंग टू गिव मी दैट दिस वैल्यू विल बिकम ट्रू. मतलब यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा. एंड इन केस ऑफ empty, we just write down top is equal to minus one. So it will going to return true and ट्रू false और based on फॉल्स. that. Yeah. So the thing is that how we add a condition. So I have added a condition like if not equal to is full. If it will going to call is full, the flow is full will go to that. The compiler will search for is full function. Here they will going to check return is equal to size that minus one. So but the top value is not equal to that last element. So then this value will equal to be true, right? And as it will come to true, it will come inside. Am I clear to you? यस. Yeah, great. If it come equal to, if it come inside, it will going to increment the pointer based on the element we inserted. और ये element कहाँ से insert हो रहा है? We are inserting from here. First we will go
this will going to be do my stack dot push 100. So as we add an element, okay, so here it is checking the same. तो जैसे कि अगर यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कम, it will come inside, it will increment the top pointer. So top pointer will be increment by next value, array of top, जो भी recent top value होगी उसमें element initialize होगा, and it will going to print that. In case अगर वो stack full होता है, then you will going to just simply print that stack is full. Am I clear to you this part? Just 1 minute. Yes, just check one. Can you explain it again? Yeah, I was saying I will from the main function I will going to insert an element. Element will Yes. be copy here. Then I will going to Yes. check is my stack is full or empty. If it Okay. is true, means is full means what, true, or here the not means false. So it means that it won't come inside. So here is full. You are using that built-in function. No, it is I created the function. Okay. This is So I it is do. using that function. Okay. Yeah. ये स्ट्रिंग में फंक्शन है ऐसे, स्ट्रिंग का मैंने एक बार कराया था शायद तुम्हें. सो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वेरिएबल जब तुम स्ट्रिंग एरे को डिक्लेयर करोगे उसमें ये फंक्शन होते हैं इज एम्प्टी इज ब्लैंक. So based on that, it what it will going to do, the top element here, sorry, it will pop down. So based on that, what we're going to do, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर स्टैक हमारा ट्रू नहीं है, मीन्स अगर स्टैक हमारा फुल नहीं है, तो मैं अंदर आऊँगा, मैं अरे टॉप टॉप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूँगा, और जो टॉप की करंट वैल्यू है उसमें जो एलिमेंट मैंने रीपास की है वो इनिशियलाइज कर दूंगा, एंड आई विल गोइंग टू Yes. पुश इट. इन केस कंडीशन फॉल्स होती तो मैं स्टैक फुल को प्रिंट कर दूंगा. व्हाट अबाउट द पॉप फंक्शन? पॉप फंक्शन विल गोइंग टू डू द सेम, बट हियर यहाँ मैं एम्प्टी को चेक कर रहा हूँ. तो एम्प्टी चेक करने के लिए मैंने क्या लॉजिक लगाया यहाँ पे, एम्प्टी चेक करने के लिए मैंने ये लगाया कि इफ माई में टॉप पॉइंटर की वैल्यू -1 है, देन इट मीन दैट इट इज एम्प्टी. तो यहाँ पे ये चेक करेगा इज इफ इज एम्प्टी में इट्स रिटर्निंग टॉप इज इक्वल टू -1. तो अगर ये नॉट लगाने से क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, राइट. सो इज एम्प्टी, क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है? बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ एलिमेंट, राइट. सो इन दैट केस it will be true because my stack is not empty. So is empty? No, right? So this will No. become true. It will come inside int top element top. तो जो top element है वो this variable को initialize हो जाएगा, आपका top pointer reduce होगा, and it will you will going to print that like which element you have popped. So for pop you don't have to follow any index, you just have to insert and you just have to call the pop function. So as you write this array top element, जो भी top element में current top value initialize हुई है वो it will going to pop that. So here I'm returning the same, I'm returning the array my मतलब जो मेरे array का टॉप पॉइंटर है, मतलब टॉप एलिमेंट में पॉइंटर टॉप की वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, राइट. तो यहाँ Yes. पे कुछ नहीं हो रहा है, ये अरे इट्स जस्ट अ प्रिंटिंग, मीन्स टॉप एलिमेंट का जो इंडेक्स वैल्यू है उसको वो प्रिंट कर रहा है. मतलब जैसे टॉप मान लो सपोज इट इज -1, यू एडेड वन वैल्यू, सो टॉप की वैल्यू अभी 0 हो गई, तो अरे 0 का जो एलिमेंट है इट विल गोइंग टू रिटर्न दैट, अदरवाइज इट विल गोइंग टू प्रिंट दैट स्टैक इज एम्प्टी एंड द टॉप पॉइंट. अगर ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स हो जाता है, मतलब इज एम्प्टी फंक्शन जो है, मतलब तुम्हारा स्टैक एम्प्टी है तो ये ट्रू है, और ये सॉरी इज एम्प्टी तुम्हारा फॉल्स है और ये ट्रू हो जाएगा नॉट के थ्रू. सो द फ्लो विल कम टू Yes. दिस एल्स पार्ट. Okay. यू हैव टू जस्ट रीड गो थ्रू दिस कोड. जैसा कोड को अगर एक बार रन करोगे ना तो और लाइन बाय लाइन तुम एक्सप्लोर करोगे, यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअली में व्हाट ऑपरेशन वी आर डूइंग हियर. और दिस इज द peak element is nothing but just to uh, like traverse to the element. Okay, so here peak element also, this peak function is an optional part.
If you want, you can add, otherwise you can ignore it. Normally push and pop only we considered. Pick is just to traverse the element. So here also we are doing the same. If this empty, अब यहाँ पे empty मुझे इसलिए मैंने this कीवर्ड यूज किया है कि just to check that current empty function I'm calling. अब मैं इसको this को remove करके इसको रन करता हूँ. So it will not going to impact much. और अगर इसके साथ होता है तो देखो, बट आउटपुट में थोड़ा देखना, केयरफुली सी द आउटपुट. यहाँ पे भी वही आ रहा है और जब मैं रिमूव करता हूँ तो वही आ रहा है. तो ये है कि मतलब इट्स एन ऑप्शनल कि तुम दिस कीवर्ड को कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं. नॉर्मली हम लोग दिस कीवर्ड वी यूज विद अ वेरिएबल, क्योंकि कंपाइलर वेरिएबल के साथ कंफ्यूज होता है कि लाइक विच वेरिएबल वी आर पासिंग और विच वेरिएबल वी आर यूजिंग. बट फंक्शन के केस में क्या होता है कि अगर तुम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो देन, या मेथड के केस में इट्स नॉट लाइक दैट. अगर इफ यू कैन वांट यू कैन इग्नोर दिस कीवर्ड, क्योंकि इज एम्प्टी अगर तुम यहाँ यूज करोगे विदाउट दिस कीवर्ड, obviously it will going to call is empty function only this keyword, because you are not creating this keyword of this. अगर हाँ ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है, अगर मान लो अगर तुम कोई क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हो या एक्सटेंड कर रहे हो, वहां पे भी इस एम्प्टी फंक्शन को यूज कर रहे हो, मतलब विद डिफरेंट पैरामीटर, देन वी हैव टू यूज दिस कीवर्ड. बट नॉर्मली देयर इज अ रेयर केस यू कैन इग्नोर दैट. तो यहाँ पे मैं वही Okay. चेक कर रहा हूँ, इज माई स्टैक इज एम्प्टी और वॉट. अगर अब मेरा स्टैक इज एम्प्टी नहीं है, उसमें एलिमेंट है, तो उसका अपोजिट जो होगा, मतलब नई का अपोजिट हाँ होता है ट्रू. तो ये ट्रू होगा, ये अंदर आएगा. अंदर आने के बाद ये जितने भी एलिमेंट है उनको रिटर्न करेगा. अदरवाइज ये क्या करेगा कि प्रिंट कर देगा स्टैक इज एम्प्टी एंड रिटर्न इज इक्वल टू -1. Yes. So like this it works. And from main function you can initialize the size. यहाँ पे भी तुम 10 दे दो, और यहाँ पे तुम इनिशियलाइज जितने टाइम पॉप करोगे वो टॉप एलिमेंट को करेगा. तो 100 90 10 50, so it will pop 50 10 90. So like this it works. So this code is very simple, is not much difficult. बस याद रखना कि अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्टैक को इम्प्लीमेंट करो, इस कोड को 2-3 बार इम्प्लीमेंट कर लेना एंड जस्ट explain them. Handwritten round में तो you can write this code. They will ask you question based on this. If they ask you coding challenges in that, then coding challenges also the logic will be this one only. See the logic of push or pop के argument देखना, कौन से argument pass किया, and based on that you write down the function. Okay. So ये queue part, will you able to implement queue your side, or shall I explain it? I'll do it. Maybe exactly same है. And here also queue array I have taken it to read the value. Yes. Their front and rear are the two pointer, and the Yes. current size is just to give a size. तो Yes. ये कोड भी as it is like that. यहाँ पे भी ये is empty function और is full function है, and dq और nq दो ऑपरेशन है, exactly same है. You can just go through this one. So let's come to this linked list. If anything is not clear on this, you can ask me question anything. So अभी Okay. यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट में एक नोड क्रिएट किया है. इन दिस नोड में एक्चुअली में क्या होता है, डेटा एंड नेक्स्ट. इफ यू डोंट वांट नेक्स्ट यू कैन टेक एड्रेस आल्सो. ओके, तो अभी मैंने एक क्लास क्रिएट की है नोड. इन दैट आई हैव क्रिएटेड टू वेरिएबल डेटा एंड नेक्स्ट. दिस पब्लिक आल्सो इफ यू वांट यू कैन इग्नोर इट. यू आर तो एक मैंने यहाँ पर दो क्लास क्रिएट की है. इफ यू कैन चेक इट हियर, पब्लिक क्लास माई लिंक लिस्ट एंड क्लास नोड. बट यहाँ पे मैंने पब्लिक क्यों डाला है, क्योंकि
ये पब्लिक, ये दोनों है, आई कैन एक्सेस इट ऑन माई कोड ऑल्सो। ओके, सो दैट्स द Okay. रीजन आई एम यूजिंग इट। तो मैंने एक क्लास नोड क्रिएट किया है ये, and in that class node I am using it. I created one more class linked list, and I am what I'm doing here, private node I created। अब ये क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल है उसको तुम प्राइवेट कर सकते हो कि मुझे उसका एक्सेस सिर्फ इस क्लास के अंदर करना है। तो प्राइवेट नोड, देखो एक मिनट, लर्न आई शुड एग्जीक्यूट दिस कोड फर्स्ट। तो अब इस माई लिंक लिस्ट एक क्लास क्रिएट की है, इसके अंदर मैंने नोड हेड लिया है, जो कि मैंने तुम्हें बताया Yes. था कि इट विल गोइंग टू होल्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, एंड आई विल गोइंग टू Yes. चेक पब्लिक boolean इज एम्प्टी। क्या मेरा हेड इज इक्वल टू नल है, जो व्हाट आई हैव हम्म एक्सप्लेन यू। इफ माई हेड इज इक्वल टू नल, इट मीन दैट देयर इज नो नोड एग्जिस्ट एंड नो डेटा। लेकिन अगर एम्प्टी है तो भी नल होगा। सॉरी, क्या? If that linked list is empty, then the head will be null. हाँ, अगर यस, उसमें एलिमेंट होगा फिर तो नहीं होगा। यस करेक्ट। अगर उसमें एलिमेंट होगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो होल्ड करेगा किसी एक नोड का एड्रेस। इवन इफ इट इज हैविंग अ सिंगल नोड, इट विल होल्ड सम एड्रेस देयर। अब ओके। हमारा इंसर्टिंग एन एलिमेंट, तो यहाँ पे कैसा होगा कि मैं मेन से डेटा पास कर रहा हूँ। यहाँ पे यू कैन सी हियर आई एम कॉलिंग माय लिंक लिस्ट इंसर्ट फर्स्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये कैसा फ्लो जाएगा, फ्लो विल कम हियर, यहाँ पे डेटा रीड होगा। नाउ नोड न्यू हेड न्यू नोड। तो ये जो नोड है, इस नोड, ये क्लास को तुम, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तुम, एंड यू आर होल्डिंग द एड्रेस। मीन्स यहाँ मतलब न्यू नोड को डेटा असाइन कर रहे हो, जो भी डेटा तुम रीड करोगे, न्यू हेड डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, एंड न्यू हेड मतलब वो हेड का नेक्स्ट पॉइंटर तुम्हारा हेड नोड होगा, क्योंकि अभी एक ही डेटा है, राइट? सो वी आर जस्ट थिंकिंग लाइक अ सर्कुलर लिंक लिस्ट हियर। मतलब समझ रहे हो कि जैसा हेड, हेड एक पॉइंटर हो गया, यस। दिस इज हेड one node, it is holding the address of another node। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, डेटा, तो ये क्या है, न्यू हेड। न्यू हेड मतलब your new node which is holding data, okay, and this part, address part, is again, it's circular link, so it is pointing to the head again। So that is saying now your head is become a new head। मतलब अभी जो head है वो सिर्फ एक ही head, as you keep on adding new node, then it will, this address will hold the address of another node, then it will hold the address of another node, like this will goes on। Am I clear to यस। you? Good। यस। अब अगर तुमको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के केस में क्या होगा? इफ यू वांट टू डिलीट इट, यू विल अगेन कॉल द पब्लिक नोड डिलीट फर्स्ट। अभी यहाँ पे तो डिलीट में सिर्फ हम उसका कि डेटा डिलीट करेंगे कि एड्रेस को डिलीट कर देंगे? यूजली डिलीट द डेटा और एड्रेस, मतलब डेटा डिलीट होता है, बस तो वन जो मिनट। प्रीवियस नोड में एड्रेस सेव होगा हम्म। उसका। नहीं, यूजली जब भी हम डेटा डिलीट करते हैं तो उसके साथ वो हम लोग नोड ही डिलीट कर देते हैं, अगर हम डेटा डिलीट करेंगे, या तो फिर जो हम लोग। लास्ट वाला होगा, कि हमने डिलीट किया तो उसके प्रीवियस वाले में जो एड्रेस स्टोर था वो चेंज होके नल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वन मिनट, एक मिनट। क्योंकि वो तो पॉइंट ही नहीं कर रहा किसी को, हमने नोड ही डिलीट कर दी। यस यस, सॉरी, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जब हमें डिलीट करना होता है तो हम लोग सिर्फ डेटा को ही डिलीट करते हैं, करेक्ट? क्योंकि वो अगर हम पूरा नोड डिलीट करेंगे तो उसका प्रीवियस वन एड्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, या करेक्ट? सो हियर ऑल्सो वी आर डूइंग, जब हम लोग सो नोड को डिलीट करते हैं,
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो जिसको मुझे डिलीट करना है, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसको मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पररी में असाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने किया है नोड टेम्प हेड, मतलब उस नोड, ये क्लास मेरा नोड है, ठीक है। मैं क्लास के थ्रू उस फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट yes, फंक्शन को, डिलीट फर्स्ट को, उस क्लास के थ्रू एक मैंने टेम्पररी क्रिएट किया है वेरिएबल, एंड टेम्प, टेम्प वेरिएबल क्रिएट करके जो मैंने अवेल लिस्ट बताया था ना, वैसे ही होता है जब हमें डिलीट करना होता है ना। मैं बताता हूँ इसमें इमेज के साथ। ये लिंक लिस्ट डायनामिक होते हैं कि स्टैटिक होते हैं? डायनेमिक होता है। तो इसमें अगर हमने कोई भी सेव कर दिया और आगे वाला अवेलेबल नहीं हुई स्पेस, बट ऐसा नहीं होता, राइट? बिकॉज नहीं जैसे हमने कोई ऐसे इंटीजर सेव किया था नोड में, तो हमने वो इंटीजर डिलीट कर दिया, तो अभी एड्रेस तो है ही नोड का, तो उसमें हमने कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग वगैरह फिल कर दी, तो फिर वो तो अगर एड्रेस में कि उसको ज्यादा स्पेस ले रहा हो और उसके पास इतनी हो नहीं तो स्पेस, हम फिर तो हम लोग उसको डिलीट कर देंगे ना। वी विल गोइंग टू क्रिएट अ न्यू नोड फ्रॉम द अवेल लिस्ट, जो कि मैंने ओके बताया था ना, ऐसा होता है कि अभी ये जो न्यू नोड इंसर्ट होगा, इसका पॉइंटर हम लोग अपडेट कर देंगे। विल गोइंग टू अपडेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड, एंड विल गोइंग टू अपडेट द पॉइंटर ऑफ द करंट नोड ऑल्सो। तो और ये जो ओके डेटा होगा वो हम लोग रिलीज कर देंगे या डिलीट कर देंगे। ओके तो वेन एवर यू डिलीट अ डेटा, जैसे हम लोग जब भी डिलीट करते हैं, सो देर आर टू वेज, आइदर यू कैन सिंपली डिलीट द डेटा, बट नॉर्मली deleting the data is not a sufficient solution. If you delete the data, then that node will be of wastage. तो मैंने जो एग्जांपल बताया था, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड डिस्क क्लीनअप, वो यूज इसलिए यस होता है क्योंकि हम लोग डेटा तो डिलीट कर देते बट एड्रेस आर स्टिल देयर। सो वो एम्प्टी नोड को पिकअप करके कंबाइन करके एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करते हैं। जितने भी एम्प्टी नोड है ओके जहाँ डेटा मिसिंग है, एड्रेस है, सो देयर वर्क इज जस्ट टू क्रिएटिंग अ स्पेस लाइक दैट। गार्बेज कलेक्टर या गार्बेज कलेक्टर, करेक्ट। तो वो ऐसे ही एम्प्टी नोड को कंबाइन करते हैं, और वो अवेल लिस्ट जो होती है ना, जिसमें एम्प्टी नोड होते हैं, उसमें वो ऐड करते जाते हैं पीछे। तो एज एज द एम्प्टी नोड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, योर स्पेस विल कीप ऑन इंक्रीज। ओके Okay, so once you assign the temporary variable, you will going to point to the next, and you will going to return the temporary variable which is holding the address. And once you delete it, means node deletion के पहले हमें temporary node को create करना होता है, और deletion के बाद what we do it, we do like this temp। हम लोग यहाँ पे temp का जो next है, मतलब हम लोग चेक करते हैं, इज माई टेम्पररी वेरिएबल का एड्रेस इज इट नॉट इक्वल टू नल, एंड टेम्पररी का डेटा इज नॉट इक्वल टू आफ्टर डॉट डेटा। आफ्टर डॉट डेटा मतलब जो डेटा में रीड डिलीशन मुझे करना है उसका डेटा। आफ्टर यहाँ पे एक वेरिएबल है विच इज गोइंग टू एक्सेप्ट द डेटा। तो हियर वी नीड टू चेक दैट कि जो भी मेरा टेम्पररी, जो भी मेरा नोड हमें ऐड करना है, उस नोड का एड्रेस क्या है। सो हियर आई एम चेकिंग द ओके सेम, टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, और जो डेटा है वो मतलब प्रीवियस डेटा नहीं होना चाहिए, जो कि डिलीट आफ्टर बोला है ना। सो वो अगर नहीं यस होता है कंडीशन, बोथ कंडीशन ट्रू, देन हम लोग टेम्प का नेक्स्ट में हम लोग मतलब जो पॉइंटर है विल गोइंग टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। इफ टेम्प डॉट ओके नेक्स्ट मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट है अगर नल के इक्वल नहीं है, तो फिर हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे। आर यू ओके गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? यस आर यू श्योर? ओके। और सिमिलरली इंसर्शन डिलीशन का भी ऐसे ही होता है। बिफोर इंसर्शन वी जस्ट चेक इट लाइक जो करंट नोड है हमारा, वेदर दैट करंट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, मतलब करंट नोड का जो नेक्स्ट नोड है, इज इट नल और वॉट। मीन्स करंट नोड का जो एड्रेस है अगर नल है, देन वी विल नॉट बी एबल टू इंसर्ट इट, राइट। अगर तो ये नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, मतलब कि ओके ये जो करंट नोड है, मान लो मेरा 4 है, इसका जो एड्रेस यस है अगर ये नल हो गया तो वो ऑब्वियसली, नल, हाँ वो तो लास्ट हाँ तो वो लास्ट होगा।
and you will not be able to insert it. If it's not equal to null, then you will going to create another node and this next will going to point that. So वही हमने यहाँ यस, पे किया है. लेकिन वो तो पहले ही पॉइंट कर रहा होगा. तो पहले पॉइंट करेगा क्योंकि हम्म. नोड का क्रिएशन तो तब होगा ना जब यू वांटेड टू इंसर्ट अ न्यू डेटा, ओके, क्योंकि तो फिर तब टेम्पररी. तक तो नल ही होगा उसका एड्रेस तो. हाँ, इट विल गोइंग टू बी नल अगर आप एंड में इंसर्ट करना चाहते हो. इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ न्यू नोड देन ऑब्वियसली दिस विल बी अ नल ओनली. तभी तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब जो मेरा करंट नोड है वो नल नहीं होना चाहिए. तो अगर बीच में डेटा डालना चाहते हो, लाइक हियर, जो यहाँ पे इमेज में यही बता रहा है ना, अगर ये करंट नोड मुझे यहाँ पे नल नहीं है, तभी तो यहाँ पे इसने टेम्पररी नोड क्रिएट किया है और इस नेक्स्ट को ये पॉइंट कर रहा है. यस. So like that it works. Or once it is done, then you just move data to that. So new node dot data मतलब जो मेरा new node का data है, the data that I will going to pass, and current dot next, जो current node का जो next है वो new node को point करेगा. मतलब new node में data, जो ये new node से तुम call कर रहे हो data and you are just adding the data to it. यहाँ पे node एक class है, उसका तुमने object create किया है, न्यू नोड. ठीक है, ये नोड मैंने क्लास क्रिएट की है. ठीक है. जावा में कुछ लाइब्रेरीज भी होती है जिसके थ्रू यू कैन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट दिस node ओके. class and all. Okay, but I thought to explain you scratch, so like that it works. तो यहाँ पे तुम न्यू नोड एक डेटा नोड क्रिएट कर रहे हो थ्रू नोड क्लास को कॉल करके. उसका जो डेटा होगा न्यू नोड का डॉट डेटा विल बी डेटा दैट यू हैव पासिंग फ्रॉम हियर, एंड देन करंट नोड का नेक्स्ट होगा न्यू नोड. मतलब जो करंट नोड में तुम्हें डेटा, तो यहाँ पर दिस इज योर करंट नोड, दिस इज योर न्यू नोड. यस. एंड सिमिलरली व्हेन यू वांटेड टू प्रिंट इट, similarly you print linked list head last. So normally how you're going to print that, just check that while current is not equal to null, मतलब मेरा current node जो है means, और you can write it like node current is equal to head. तो मैंने यहाँ पे head initialize कर दिया है. If you want you can directly take a head और यहाँ पे check कर सकते हो कि my head node is not equal to null. I took it in the form of variable. तो मैंने यहाँ पे like I have written, because मैंने हर function में ऐसे create किया है, node current is equal to head. Now I'm checking my head is not equal to null. जो मेरा head pointer था, अगर वो null नहीं है, then I will going to write current dot display node data current is equal to current dot next. तो वो keep on, it will keep on printing the next node. और मैं main function से insert function को call करके data insert करूंगा और print link list को करके print करूंगा. तो ये data कुछ इस फॉर्मेट में आएगा. तो जैसे कि हम आउटपुट देख रहे हैं, तो हमारा जो आउटपुट है ये ऐसा आ रहा है 10 20 30. 1070. यस, क्योंकि मैंने डेटा कैसे डाला है 50 20 70 10 20. ओके, एंड आई वांटेड टू एक्सेस 1 मिनट. प्रिंटिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो बेस्ड ऑन द एड्रेस दैट मेमोरी इज असाइनिंग हियर, द डेटा विल बी एक्सेस. कि जो मेमोरी जो एड्रेस ओके. असाइन कर रहा है ना, उसके बेसिस में ये प्रिंट कर रहा है. ओके. 10 70 60 ऐसा आ रहा है. 10 70 60 30. ओके, जो नहीं आ रहा है. डिलीट नोड, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया है. ओके, नोड या I call one node and I deleted 60 there. Okay, my linked list delete after node. Node is 60 के बाद जो भी असाइन हुआ है वो डिलीट हो गया है. तो ये ऐसा प्रिंट हुआ है 10 70 60. 60 के बाद जो 50वां नोड है वो डिलीट हो गया है. उसके बाद मैंने 20 इंसर्ट किया है. मतलब मैंने नहीं, मतलब बेस्ड ऑन द लाइक जो एड्रेस असाइन हुए हैं उसके बेसिस में ये वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे जैसे 50, अगर मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, मैं 60 की जगह 20 करता हूँ और रन करता हूँ.
10 70 60 why it is giving 20 node delete after 20 20 के बाद कोई नोड ही नहीं है। हाँ करेक्ट इसलिए यस तो 10 के बाद जो नोड है 10 के बाद क्या 70 तो 70 को इसने डिलीट कर दिया तो लाइक दिस इट वर्क्स तो एक काम करो इसको कोड को पहले अच्छे से एनालाइज करो गो थ्रू दिस कोड रन ऑन योर इक्लिप्स वन बाय वन लाइन को एक्सप्लोर करो इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क मी so if it is fine then we will see some more operation on queue stack and linked list कि ये कोड कहाँ पे शेयर करोगे? GitHub का मैंने उन्हें एक्सेस देने के लिए कहा था बट आई थिंक ही माइट बी बिजी